I'm available. Okay. Assalamu alaikum, everyone. We are very excited to host Ghani Global Holdings. We are extremely thankful to the company management that they've given us time, and we hope it's going to be an exciting session. Ghani Global is a leading chemical company in the country, and over the years they've really grown in terms of size, in terms of overall footprint within the sector, and the chemical sector still remains relatively underrepresented on the equity market. And we hope that as more chemical companies come in or the existing ones grow, the representation will hopefully increase. So we'll just start the session exactly at 4:30, about just a minute, so that other people can also sort of join in. If you can, Sanakwan, if you can, make any one of us Shanwaz, Mr. Shanwaz is there. I'm sorry, I can't. Gigi, but I'm sorry. अगर आप admin कर लेंगे ना हमारे group okay. वो he'll be able to. Okay, just a minute, I'll do that. जी बिल्कुल हो रहा है, एडमिट कर रहे हैं. We'll just get them admit. इसका स्क्रीन शेयरिंग अलाउ कीजिए. जी हो रहा है. अभी आ जाएगा आपके पास ऑप्शन. You will get the option now. जी, please proceed. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Should we start with the introduction of the team which is gathered here so that everybody? Yes, please. Okay. Let me first of all introduce you with Mr. Atique Ahmed Khan. Mr. Atique Ahmed Khan is an engineer by profession and is the patriarch or the elder of this group. Ghani Global Group is emerged out of Ghani Glass Group. They're basically the same family. The family has been in the business of chemical, in the business of mining, construction, and many other areas of trade and commerce. The first industrial installation that they started off with was Ghani gases at that point in time, back in 2007 and 8. And by the way, that it was the first company which came
before listing through the book building process. So Mr. Atique has been heading this transformation of the group from glasses, from mining to glass to the chemical industry. Mr. Wasim Qureshi is the next gentleman who is sitting with us. We're very fortunate to have him here. If you know that as of now we are going through a process of right share issuance in the service fabric, which would become G3 technology. In that company, we also have an investment which we would make on 50-50% basis in a joint venture entity called Kilowatt Labs Pakistan Limited. Mr. Wasim represents the USA side of that joint venture, and the supercapacitor technology that we're going to introduce here in Pakistan, he has the patent for that technology from the USA. Then in front of me is Mr. Farooq Ahmed Khan. Mr. Farooq Ahmed Khan is also an engineer by profession, and he is heading or is the chief executive of Ghani Global Glass Limited. Next to him is Mr. Amir Zia, who is our financial advisor. Then next, we have Mr. Asim, who is the group CFO for the group. Then Mr. Shahnawaz, who is heading the finance function. And then we have the group company secretary, Mr. Farzand Ali. So we have the entire group represented one way or the other to make this presentation to you. How we would start, we would request Mr. Asim to make a quick intro and apprise you about the activities, about the financial side of the businesses that we operate under the group, and then we'll be able to take the questions from the audience. Please. Ghani Global Group of companies comprised of following entities: Ghani Global Holdings Limited, Ghani Global Glass Limited, Ghani Chemical Industries Limited, Service Fabrics Limited, Kilowatt Lab Technology Limited, and Ghani Engineering. Background: the entrepreneurs of this group have a rich history of 40 years in diversified sectors involving mining, textiles, industrial and medical gases, glass, chemicals, construction, food, and trading. The group comprises of many private and publicly listed companies who pride itself in managing business in accordance with the dictates of Sharia and utilizes Islamic mode of financing within its group enterprises. About Ghani Global Group. Ghani Global Holding Limited, formerly Ghani Gases Limited, group holding company, the principal activity of companies to manage investments in its subsidiary and associated companies and trading business of health and chemical related products. Ghani Global Glass Limited, it is engaged in manufacturing and sale of glass tubes and oils. It's one and only manufacturer of glass tubes in Pakistan, having state-of-art pure technology for its manufacturing facility. Ghani Chemical Industries Limited, manufacturing and sales of industrial and medical gases and chemical. Currently, Ghani Chemical Industries Limited has the largest manufacturing facility in Pakistan in industrial and medical gases. Service Fabrics Limited, investment. It is supposed to invest in Kilowatt Lab and calcium carbide project. Calcium carbide projects manufacturing, sales, marketing, and research and development of calcium carbide and its derivatives. Example: acetylene, calcium carbide, carbon black, carbon dioxide, hydrogen, Pakistan. Kilowatt Lab Technology Limited, under the process will be engaged in manufacturing of energy storage devices and supercapacitors. Ghani Engineering Private Limited, engaged in providing engineering services at corporate level. The main sponsors belong to the Global Group. The origin goes back to Ghani Glass Group. After family distribution, Ghani Global Group was founded in 2007 and started with its chemical sector company under the name Ghani Gases Limited. Within a short span of 14 years, the group has expanded its presence from medical and industrial gases to manufacturing and medical purpose glass for infusion oils, besides specialized trading in different products. The company sponsor, director, associated with Ghani Global Group of companies are both experienced and qualified with their efforts which resulted in formation of Ghani Global Group of companies. Mr. Ahmed Khan, Chairman,
is graduate from University of Punjab. He has got 4 years experience in university senior management position. Mr. Atique Ahmed Khan, sir, qualified mechanical and electrical engineer, has got 30 years experience in industrial sector at higher management position. He reactivated one of plants of Ghani Group at a phenomenal pace of 2 months. Mr. Farooq Ahmed Khan, sir, managing director, is engineer graduate from University of Illinois, Chicago, USA, has got 22 years experience in industry sector, has got privilege of holding patent which is registered in USA. He also commissioned a float glass plant in very short span of time. Next. This chart is very important for the investors to understand, all those people who are present in this briefing. Ghani Global Holding Limited, this is the holding company, a listed company. This company underneath has 2 direct subsidiaries. One is Ghani Global Ghani Global Glass Limited, of which Ghani Global holds 50.10% shares. Then another company that it has, this is Ghani Chemical Industry. This is by far, is considered the cash cow for the group. Ghani Global Holding Limited owns about 75% of this company. The composition is shown here. So as of now, as I said, Ghani Global is listed. Ghani Global Glass is also listed. Ghani Chemical Industry would probably, we hope that this company would become listed in a matter of 1 month's time through reverse listing with Kareem Silk Mill Limited. We have our final hearing for the case, which is scheduled on 14th of September. Hopefully, as and when this case is decided, then Kareem Silk Mill would be restored to the normal listed counter of PSX, and then we apply for the reverse listing of Ghani Chemical Industries into the Kareem Silk Mill Limited into Ghani Chemical Industries Limited, and for that purpose we'll only have to share the information memorandum with the market. So this is what would be the arrangement. We'll by the end of this month, or hopefully by mid of next month, we'll have 3 listed companies which would be belonging to this group. Other than this, you already know that we have acquired Service Fabrics. Service Fabrics acquisition, the percentage of shareholding, etc., would depend on what percentage of right shares are not acquired by the investors in the market. We assume that if all the right shares are subscribed by the general public, we'll have about 30 or 35% shareholding available out of the unsubscribed portion, from which we would like to go up to only 29.99%, and rest of the shareholding would probably be acquired by other associated families of our group. So that by October 31st, the group would have 4 listed companies. The Service Fabrics would be changing its name to G3 Technologies. In Service Fabrics, we intend to have 2 projects, and we'll brief you about those. So this is the wholesome chart that in the months to come, this group would have 4 listed companies in the market. Thank you very much, Aftab, for very beautifully explaining the group structure. There is financial synopsis of the group, historically starting from financial year 16 to financial year 18. This is very important for you to understand. If you look at, I already mentioned that Ghani Chemical is the leading cash cow. This is the cash generator for the group. If you look at, this is part of now public information. Board meeting has already taken place. Yeah. If you look at the growth in the revenue from financial year 20 to financial year 2021, it is almost double. Financial year
we had a gross revenue of about 2.3 billion, which has risen to about 4.3 billion. And what is to be noted is profit after tax. Last year, the same company had a loss of about 161 million, and this year we'll be making about 700 million with an EPS of 4.88 rupee per share. So it means since 75% of this company is owned by GGL or Ghani Global Limited, so the impact of higher earning, the impact of earning because of the turnaround, complete turnaround in Ghani chemical business. As you know that this company is in the business of producing and selling industrial and medical gases. This is the main, the industrial gases business or the medical gases business is the mainstay of the group. So with this earning potential, you would see that earning record, what would be the overall impact on the earnings of GGL. Next. This balance sheet of the Capital Industries Limited. Another thing is on Ghani Chemical, the taxation is the accounting taxation. There is no cash flow, cash out taxation. Okay. Yeah. The shareholder equity of GCIL as of now stands at 2.9 billion. And then if you the total assets are 5.9 around 6 billion. This yeah. The total assets of the asset of the group stand at 5.9 billion. Next. These are ratios of the company. Gross profit rose from 24 to 43. Operating profit 4.74 to 30.62. Net profit negative last year 7.85 to 18%. Breakup value of share was 18.25 per share. It is now 18.97. Currently it was 0.72 last year. It is now 1.03. Return on equity is minus 7.6 last year and 23.73. Debt equity for 55, 43 as against 55. Like equity is 7%. EPS was negative. Last year loss per share 1.22. This year it is positive 4.88. And total assets stand at 5.990 million. What is to be noted by the investing community here, as far as the financials or the performance of GCIL is when you compare this with our other main competitors, the gross profit ratio and the profitability, net profitability percentages are far better compared to our competitors in the market. With 18% of net profit and 43% of gross profit, I think we can compete with most of the efficient companies in the market. And this is what what distinguishes us from our competitors in the market. This is graphical presentation of revenue, net profit, and gross profit of Ghani Chemical Industries Limited. This is about Ghani Global Glass Limited. Its revenue increased from 1.5 million to 1.645 million. And its bottom line just needs to go to incentive. ये उसमें आ जाए ये तो पब्लिक फिगर बनते हैं नहीं आ सकता नहीं कैंडिडेट भी नहीं आ सकते. Next. Revenue of GCIL is 4351 and revenue of Ghani Global Glass is 1645. Overall Ghani Global Holding is 8. ये भी नहीं आ सकते. ये revenue तो कैसे आ सकता है यार अकाउंट बाहर आ सकता है. Next, we be expecting a revenue of about 4.8 billion next year and 2.6 billion in case of Ghani Global Glass. In Ghani Global Holding Limited, the revenue that we expect from trading of refrigeration gases, calcium carbide, as well as from the cylinders, the trading of cylinders. These are the three new avenues that we are
bringing into the earnings potential of GGL, which is Ghani Global Limited. So next year, what we anticipate is the overall revenue of the group would surpass 10 billion rupees. Next. आमिर साहब आप एक्सप्लेन कर दें। ये अभी सर्विस फैब्रिक के ऊपर हम बात करेंगे। सर्विस फैब्रिक पे जो जिसका राइट शेयर इशू हो रहा है, इस पे किस किस्म के प्रोजेक्ट्स हैं और उसकी फाइनेंशियल्स क्या है, इसके लिए आई हैव रिक्वेस्टेड मिस्टर आमिर ज़िया टू ब्रीफ द पार्टिसिपेंट्स हियर। जी, हम सर्विस फैब्रिक्स में जैसे आफ्ताब साहब ने फरमाया कि हम 2 प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। एक तो किलोवाट लैब्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के अंदर हम सुपर कैपेसिटर प्रोजेक्ट ला रहे हैं। तो सर्विस फैब्रिक के लिए ये इक्विटी इन्वेस्टमेंट होगी इन किलोवाट लैब्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो ये 50-50% पार्टनरशिप है, जो कि 50% इन टर्म ऑफ शेयर होल्डिंग, 50% शेयर्स होंगे सर्विस फैब्रिक के पास होंगे और 50% किलोवाट लैब्स यूएसए के पास होंगे। Whereas investment amount is concerned, 650 million contribute करेगा सर और 350 million contribute करेगा किलोवाट लैब्स यूएसए। जो रिमेनिंग डिफरेंस है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का समझने के टेक्नोलॉजी जो चूँकि यूएसए की टेक्नोलॉजी है, पैटेंट टेक्नोलॉजी है, ये उसके लिए होगा। टोटल प्रोजेक्ट का साइज इंक्लूडिंग वर्किंग कैपिटल इज अराउंड 1.3 बिलियन है, जिसको हम आउट ऑफ विच हम 1 बिलियन का इक्विटी रेज कर रहे हैं और दोनों पार्टी से और रिमेनिंग जो है बैंक बोरिंग से पूरा होगा। जो हम टारगेट कर रहे हैं पहले साल में, इनिशियल ईयर्स में, हम इन टर्म ऑफ इसको यूनिट्स कहते हैं, किलोवाट आवर्स, यानी जो आपके इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट्स हैं, हम तकरीबन 100,000 यूनिट्स को प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि हम इनिशियल रेज करेंगे। ओवरऑल जो कैपेसिटी है वो 250,000 यूनिट्स की कैपेसिटी का ये प्लांट होगा। इक्विटी अकाउंटिंग यूज करेंगे क्योंकि इसके अंदर जो कंट्रोलिंग है वो होगी किलोवाट यूएसए की। तो फॉर सर्फ जो अकाउंटिंग यूज होगी, इक्विटी मेथड यूज होगा, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स होगा। दूसरा, और ये प्रोजेक्ट हम लेके आ रहे हैं फैसलाबाद में, जहाँ पे हम 10 एकड़ लैंड ऑलरेडी इन द प्रोसेस एक्वायर किया है, उसके ऊपर लेके आएंगे। फैसलाबाद इंडस्ट्रियल जोन भी टैक्स एग्जेम्पशन एंटिटी में आता है, तो इसके ऊपर टैक्सेशन फॉर 10 साल एग्जेम्प्ट है। दूसरा प्रोजेक्ट हम हतार में ला रहे हैं जो कि कैल्शियम कार्बाइड का प्रोजेक्ट है। उसका टोटल प्रोजेक्ट साइज है 1.4 बिलियन इंक्लूडिंग वर्किंग कैपिटल, जिसमें से हमने जो हमारा राइट इशू है एग्जिस्टिंग, उसमें से 1 अरब जो 1000 मिलियन है हमने एलोकेट की है फॉर दिस प्रोजेक्ट एज ए इक्विटी इन्वेस्टमेंट। 400 मिलियन फिर हम इसको बैंक बोरिंग से पूरा कर रहे हैं। इसकी जो कैपेसिटी है वो हम तकरीबन 275 टन मैट्रिक टन पर डे के हिसाब से हम इसको लेके आ रहे हैं। 67 टन पर के हिसाब से लेके आ रहे हैं। और ये जो प्रोजेक्ट है ये हम हतार में लाएंगे, इंडस्ट्रियल स्टेट है वो भी, और 10 साल के लिए वो भी एग्जाम्प्ट है। दूसरा प्लांट जो हम, तीसरा जो प्लांट है वो हम केमिकल में जो अनाउंस किया है वो भी हतार में ला रहे हैं, जो कि हम केमिकल में लेके आ रहे हैं, जिसकी बात वन ऑफ द लार्जेस्ट हम प्रोड्यूसर हो जाएंगे इन केमिकल गैसेस। आप इसका गैसेस का 275 पे ऐसे आमिर साहब ने बताया कि ये हमारा तारुफ प्रोजेक्ट आ रहा है केपीके में, इसका कोई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है कोई यानी सिग्निफिकेंट, तो वहाँ उनकी रिक्वायरमेंट भी थी और इसको हम लेके आने से हमारे जो है एनर्जी सेविंग खासी ज़्यादा हो जाएगी और बड़ा एफिशिएंट प्लांट होगा ये, और होपफुली अगले साल इन्हीं दिनों में ऑपरेशन हो चुका होगा। तो इसके लिए जो जमीन है वो ये वी हैव ऑलरेडी एक्वायर्ड फॉर बोथ प्रोजेक्ट, केमिकल के लिए भी और जो कैल्शियम कार्बाइड के लिए भी प्रोजेक्ट हम के लिए जमीन ले चुके हैं। वी आर एक्सपेक्टिंग कि दोनों प्रोजेक्ट जो हैं, तीनों प्रोजेक्ट अगले साल कमर्शियल प्रोडक्शन में आ चुके होंगे। तो 3 सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट हैं जिसके अंदर ये हम गनी ग्रुप लेके आ रहा है। इसमें I would like to elaborate one more thing in GCIL, that 275 ton per day project, जब ये प्रोजेक्ट ऑनलाइन आ जाएगा तो एटलीस्ट 50% ऑफ कंपनीज कैपेसिटी एंड सेल जो है ना वो विदाउट इनकम टैक्स हो जाएगी बिकॉज ऑफ गोइंग इनटू द फ्री टैक्स जोन। तो उससे काफी प्रॉफिटेबिलिटी में जो है वो बॉटम लाइन में फर्क पड़ेगा। एंड आल्सो द इलेक्ट्रिसिटी यूजेज फॉर द न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी will be much better for that plant also.
Next. So this is it from our side. Now we would be glad to take the questions from your side. Thank you very much. That was a very detailed presentation. I think it was also very important because the corporate structure is such that हम ये चाहते हैं कि जो investors हैं उनको भी ये समझ आए, and जो हमारा Q&A session होगा उसको हम उर्दू में करेंगे because we are getting requests के जो है session को थोड़ा मतलब उर्दू में किया जाए, तो I would request the management कि जो आपके आंसर्स होंगे उसको अगर आप उर्दू में रखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा. Thank you very much. So right, I mean, there's obviously a lot of questions that we have. There are a lot of people who are actually doing this right now. So I'll start with the first question that has actually come up from Naveed, and he's saying that Indian calcium carbide production is 81,000 metric ton per year. By that metric, the Pakistani जो हमारी जो प्रोडक्शन है that should be 16,000 tons. तो क्या आप इस पे थोड़ा elaborate कर सकते हैं कि हमारी अभी डिमांड कितनी है और कितना जो % है वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं? पाकिस्तान में इस वक्त जो है पिछले 4-5 साल से जो इंपोर्ट हो रहा है वो तकरीबन रेंजिंग फ्रॉम 13,000 टन टू 17,000 टन पर ईयर. राइट, ठीक है, एक्सीलेंट. सो यू and double GL is actually coming up with 1,000 ton plant. So there is a significant double GL. The total capacity of this plant will be about 19,000 tons, 19 to 20,000 tons per year. But okay, so actually, this plant will make calcium carbide as well as carbon black. Carbon black uses calcium carbide as a raw material. We will consume about 4,000 tons of the low quality calcium carbide from our plant to make carbon black, and rest of the 15,000, 14,000, 16,000 tons will be used for the market. और ये डबल जीएल में ये जरा गौर से जो इन्वेस्टर्स को जो समझना चाहिए कि ये प्लांट हमारा G3 टेक्नोलॉजीज में आएगा. G3 टेक्नोलॉजीज में 100% जो प्रोडक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बाइड है वो G3 टेक्नोलॉजीज में आएगी. और इट्स द बेनिफिट इंडिजिनाइजेशन, जिस तरह से डॉलर का रेट बढ़ रहा है, यू कैन अंडरस्टैंड. अभी भी हम समझते हैं 17-18 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट होती है पाकिस्तान में, और अगर रुपी डिप्रिशिएट फर्दर होता है तो द स्ट्रेस ऑन द लोकल मार्केट, you know, which would be forced to import at a higher rate. We believe that, you know, when we indigenize, so its benefit to the economy to Pakistan would be huge. You know, not only that, you know, we'll be इसको इंशाल्लाह लोकली मैन्युफैक्चर कर रहे होंगे, लेकिन कुछ ऐसी बाय प्रोडक्ट जो इसके अलावा इंपोर्ट होती हैं 4-5 मिलियन डॉलर की, तो हम देख रहे हैं कि 22 से 25 मिलियन यूएस डॉलर की मार्केट को रिप्लेस करने का, इंपोर्ट मार्केट को रिप्लेस करने का इस पे पोटेंशियल है. हमारे गनी G3 टेक्नोलॉजीज पे जो कैल्शियम कार्बाइड का बिजनेस, G3 टेक्नोलॉजी सर का जो चेंज सर्विस फैब्रिक का जो नाम जी and the way the right now the freight charges are almost $350 per ton. तो वो अगर ऐसा रहा तो I mean it will make a huge difference. इसको आप यूँ समझें कि जो इसका रॉ मटेरियल है कैल्शियम कार्बाइड का, वो इसमें लाइमस्टोन ज्यादा यूज होता है और कुछ कोक यूज होता है. लाइमस्टोन पाकिस्तान में अबंडेंटली अवेलेबल है. जैसे आफ्ताब साहब ने फरमाया कि डॉलर जो कि अभी इंपोर्ट हो रहा है, डॉलर का तो स्टेट ऑफ इम्पैक्ट आता है, लेकिन जब आप खुद बना रहे होंगे तो आपको सिर्फ कोक इंपोर्ट करना है, रेस्ट ऑफ द मटेरियल यहाँ पे लोकली अवेलेबल हो जाता है. तो डॉलर के इंक्रीज होने से आपके मार्जिन इंक्रीज हो जाए. एब्सोल्युटली. इनफैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है बिकॉज हमारे यहाँ बहुत बड़ा एक चैलेंज है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो है केमिकल सेक्टर में स्पेशली. दैट्स अ वेरी बिग एरिया अपॉर्चुनिटी वाइज, और बिकॉज जैसे हमारा ये डिवैल्यूएशन हो चुका है तो आई रियली थिंक दिस इज जस्ट द बिगिनिंग बिकॉज इतनी एक बड़ी मार्केट है जिसको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट करना है हमने. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव. आई विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला सवाल जो है जस्ट अ सेकंड, अगला सवाल होगा दैट, हाँ, बेसिकली वकास अहमद साहब का ये सवाल है कि जो आपका ग्रॉस मार्जिन था वो था 42% फॉर द हाफ ईयर, whereas the same period जो पाक
पाक ऑक्सीजन है उनका था 22%। तो क्या आप ये समझा सकते हैं कि जो आपके मतलब कंपेटिटर हैं उनका जो जो जीपी है वो कम है, आपका ज्यादा है, तो क्या आपके पास कंपेटिटिव एडवांटेज है और क्या ये नंबर आगे जाते हुए आपको सस्टेनेबल लगता है? एक्चुअली गनी के पास जो सबसे बड़ी चीज है वो है प्रोडक्शन कैपेसिटी। Right. We have a capacity to serve the market. Unfortunately, our competitor does not have the capacity to serve the market. So what they have to do, most of the time, they have to buy from other manufacturer of the country. And if they buy from the other अगर वो किसी दूसरे manufacturer से buy करते हैं तो वो manufacturer अपना पूरा portion दरमियान में रखता है, फिर उनको sell करता है। तो वहां पे जाके आप अपना competitive काफी सारा खो देते हो। तो दैट Right. वो मेन रीजन है कि उनको जो उनका जो डीपी है वो नीचे जा रहा है। राइट, अगर इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करें, दिस इज बेसिकली जैसे वो टोल ऐसे यू राइट उन्होंने आउटसोर्स किया, उन्होंने बेसिकली आउटसोर्स किया बैक एंड से, तो फिर इसका मतलब है टोलिंग भी है सनाखान, प्लस जो है जो टेक्नोलॉजी आपके प्लांट आज दुनिया में हर चीज की इकोनॉमिक्स देखी जा रही है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो जब आपकी प्रोडक्शन एक लिमिट पे होनी चाहिए, अगर वो कम होगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से मार्जिन कम हो जाता है। तो ये 3-4 फैक्टर जैसे हाफिज साहब ने कहा वो भी है, ये भी ये फैक्टर है, क्योंकि आप नई टेक्नोलॉजीज ऐड नहीं करेंगे विद टाइमली, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली कंपैटिटर जो है वो 2-3 साल पहले मेक शिफ्ट हुआ था, यहाँ मल्टीनेशनल कंपनी थी तो लोकल कंपनीज आ गई, वो उस तरह जिस तरह इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए थी वो शायद ना आ सकी। तो ऊपर से ये जो कोरोना आया है जिसमें ऑक्सीजन इज बेसिकली द मेजर प्रोडक्ट ऑफ एवरीवन, यू नो। तो इस वक्त ऑक्सीजन पूरी दुनिया में शॉर्ट हो गई, नॉट ओनली इन पाकिस्तान। ये साथ आप इंडिया में देखिए तो इंडिया जाके तो इस वक्त साउथ अफ्रीका से, सऊदी अरेबिया से इंपोर्ट कर रहा है। तो ये 3-4 बड़े फैक्टर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एंड जैसे आपने कहा कि हम क्या सस्टेन करेंगे, we hope it will be increased, maybe not like already 43% है which is on the country level। अगर आप देखें कंपनीज को तो उसमें आप जरूर देखेंगे कि इसके अंदर चीजें जो आई हैं और इनको हम जब मेंटेन करेंगे तो हम नए प्लांट्स इसलिए ला रहे हैं। तो हमारा GCL 275 टन का प्लांट है, दैट इज मोर एफिशिएंट, मोर इकोनॉमिकल। तो ये फैक्टर है सारे जो इसके देखिए, जो एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड, एंड आई थिंक यू नो मार्केट शुड कंसीडर दिस एज एन इंजीनियरिंग ग्रुप। मैंने दोनों मेन स्पॉन्सर्स के इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के ऊपर फोकस किए। एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किस तरह से हम रखते हैं, कंटेन करते हैं, बिकॉज दे आर आल्सो इन द ऑक्सीजन बिजनेस। आजकल किसी भी फर्नेस को यू नो बिकॉज फ्यूल कॉस्ट बहुत ज्यादा जा रही है, LPGs एक्सेट्रा, आप एफिशिएंट करते हैं बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन बूस्टिंग। उस ऑक्सीजन बूस्टिंग के साथ आपको फ्लेम की पावर तो उतनी मिलती है, लेकिन आपकी LPG या दूसरी फ्यूल जो है उसका यूजेज ऑफ द रेशियो कम हो जाता है। दिस इज यू नो द काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी जो हमारा खास तौर पे GGL जो गनी ग्लोबल ग्लास है जो हम यूज कर रहे हैं, एंड दिस इज द सेम काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी जो हम भी एम टू यूज इवन इन हतार, जो हमारा 275 मेट्रिक टन कैपेसिटी की प्रोडक्शन ऑनलाइन होगी इंशाल्लाह किसी वक्त अगले साल। तो वी बिलीव कि because of the new plants, because of the technology that we have indigenously developed within the company, इसकी वजह से हम इंशाल्लाह 40% और competitive हो जाएंगे in our production capacity। टैक्स का इम्पैक्ट उसके अलावा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह these are the things। Excellent. Sir, just a follow-up question on this. अभी पाकिस्तान की टोटल जो हमारी ऑक्सीजन की जो मार्केट है, जो गैसेस की मार्केट है, उसकी टोटल मतलब कंजम्पशन कितनी है उसमें, और उसमें आपका जो है वो मार्केट शेयर कितना है, और एक्सपेंशन के बाद फिर क्या एक्सपेक्टेड है in terms of the market share? About 12 million cubic meter of oxygen demand right now in the country, total gases demand in the country. जी. And Pakistan, our share is roughly about 45%. 45%. Excellent. एक और चीज आपका जो ना जो चल रहा है वो उसमें like people are asking that the revenue increase from last, जो revenue increase है जो पिछले साल से इस साल में
there is a quite a bit of increase in this. तो क्या ये sustainable है या क्या चीज है? जी जी ये सवाल भी है। जी मेजर जो चीज जो हमें फर्क है, luckily government invested a lot of money in healthcare. इससे पहले क्या होता था, जो हॉस्पिटल्स होते थे वो सिलेंडर्स पे चलते थे. Moving of cylinder, transportation of cylinder and filling the cylinder is a quite a hectic project. तो अब इस कोविड की वजह से फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव एंड फोर्थ वेव में गवर्नमेंट ऑलमोस्ट 70% ऑफ द जो रूरल एरिया के भी हॉस्पिटल हैं उनको सेंट्रलाइज ऑक्सीजन में शिफ्ट कर दिया. सेंट्रलाइज ऑक्सीजन में शिफ्ट करते हैं, पीपल कैन हैव वेंटिलेटर्स. और आप सिलेंडर की बेस पे तो वेंटिलेटर रख ही नहीं सकते, आप वेंटिलेटर रख लेते हो, उसके बाद ऑपरेशन कर सकते हो बहुत से बेहतर. तो उस वजह से ऑक्सीजन की डिमांड हैज इंक्रीज्ड अ लॉट इन दीज कोविड सिचुएशन. और अब होगा क्या, हॉस्पिटल में अगर कोई जाएगा तो उसको उसके लिए ऑक्सीजन इजीली अवेलेबल होगी और अच्छी प्राइस पे अवेलेबल होगी, तो ये डिमांड हम समझ रहे हैं और ऊपर चली जाएगी. अच्छा, और ये सिर्फ मेडिकल का नहीं है, ये भी जरा गौर कीजिएगा. आजकल हाईएस्ट प्राइसेस के ऊपर ऑक्सीजन की प्राइस चल रही है 150 रुपए पर केजी के हिसाब से. ये पिछले साल जब कोविड बहुत पीक पे था ये प्राइसेस नहीं मिली थी. इस वक्त कोविड की इतनी पीक नहीं है. तो दो यूजेज होते हैं ऑक्सीजन के, द इंडस्ट्रियल यूजेज एज वेल एज द मेडिकल यूजेज. तो व्हाट वी सी इज दैट मेडिकल की तो डिमांड और एफिशिएंसी क्रिएट हो गई है, साथ साथ इंडस्ट्रियल गैसेस की भी डिमांड बढ़ती जा रही है एज मोर एंड मोर कंपनीज. इसको अगर आप दूसरी जगह पे देखेंगे, नेक्स्ट ईयर हमारा एंग्रो पॉलीमर का प्रोजेक्ट आएगा जो रफली अबाउट 700 बिलियन रेवेन्यू वैल्यू कंपनी में पार्क होगा इंशाल्लाह. उसके बाद अगर आप दूसरी चीज देखेंगे, अब पिछले साल में आपकी जीडीपी ग्रोथ इज रफली टचिंग 0. तो अगर जीडीपी ग्रोथ जो है वो 4-5% पे जाती है तो ऑक्सीजन हैज टू टेक आल्सो अपना शेयर भी उसमें आएगा. इसमें नाइट्रोजन को हम बिल्कुल बोल रहे हैं. जब डॉलर की जब ऑयल इंटरनेशनल प्राइसिंग $70 पे जाती है ना, पाकिस्तानी ऑयल प्रोडक्शन वायबल हो जाती है. तो एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन भी $50 के इस वक्त पिछले साल से अब तक, जैसे हमारे अटक रिफाइनरीज, तमाम रिफाइनरीज और ऑयल जितनी भी कंपनीज एक्सप्लोर कर रही हैं उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा देती है, जिससे नाइट्रोजन की कैपेसिटी बढ़ जाती है, प्रोडक्शन भी बढ़ानी पड़ती है और उसकी यूटिलाइजेशन भी बढ़ती है. इस वक्त तकरीबन पिछले 3 महीनों को अगर आप सिर्फ कंपेयर करें तो पिछले 3 महीनों से ये 3 महीने डबल हुए हैं. तो ये बहुत बड़ा फर्क, सिग्निफिकेंट फर्क है. आर्गन की यूटिलाइजेशन में बहुत बड़ा फर्क है. इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, ग्रोथ के साथ आर्गन की जो रिक्वायरमेंट है वो इस वक्त मेरा ख्याल हिस्टोरिकल हो रही है पिछले तकरीबन 4-5 महीनों से. तो इसका लुब्बे लुबाब यही है कि एज द इकोनॉमी ग्रोज और कम बैक टू नॉर्मल और इम्प्रूव होना शुरू होती है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इम्प्रूव होना शुरू होती है, तो वी बिलीव दैट दिस कंपनी especially the GCL is poised to have a consistent growth in the times to come. इसमें एक पॉइंट ये भी ऐड करना चाहूंगा कि इसमें हमारी लास्ट ईयर मैन्युफैक्चरिंग के नंबर्स आपके पास आ रहे हैं, कितने एब्जॉर्बेंटली बढ़ रहे हैं. उसके साथ साथ ये कि हमारे पास 650 बिलियन प्लस के जो टर्म के लोन जो हैं डिस्बर्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से एक्टिविटी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है, जो कि 1 से 2 साल के अंदर जो ऑनलाइन आ जाएंगे. जैसे जैसे इंडस्ट्री ग्रो करती है हमारे प्रोडक्ट की जो डिमांड बढ़ती चली जाती है. तो गोइंग फॉरवर्ड हमारी प्रोडक्ट जो इंशाल्लाह तो बढ़ती जाएगी और ये इंशाल्लाह सस्टेनेबल रहेगी. Excellent, excellent. Thank you very much. The next question is कि जो आपका ये किलोवाट लैब्स है, उनके जो मेन कस्टमर्स होंगे उस थोड़ा या उनके जो बेसिकली क्लाइंट्स होंगे उनकी तरह आप बताएं प्रोफाइल क्या होगी और किस इंडस्ट्री को आप ज्यादा सेल करोगे उस पर थोड़ा ये टेक्नोलॉजी, इसके लिए मैं वसीम कुरैशी साहब को आपसे कहूंगा कि वो आपको डायरेक्ट रिस्पांस करे. दिस इज द टेक्नोलॉजी ऑफ द फ्यूचर. एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी, it will be required, like as the industry expands etc. आप देखेंगे यूपीएस की रिप्लेसमेंट से लेके यूएसए में तो दिस इज रिक्वायर्ड अंडर द लॉ कि एवरी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उसने 20% अपनी स्टोरेज एनर्जी स्टोरेज जो मेंटेन रखनी है. खासतौर पे अगर लास्ट ईयर अगर आपने टेक्सास पे देखा हो कि टेक्सास 2 या 3 दिन ग्रिड से आउट हो गया था और मैक्सिमम आउटेज हुआ था. तो ये कानून है यूएसए में. अभी तक हमारी जो तमाम जो इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन है लाइक डिफेंस इंस्टॉलेशन एटसेट्रा, हमारा ख्याल है कि ये प्रोडक्ट would be very useful in replacing the old methods of energy storage.
उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा वसीम कुरैशी साहब से टू हाईलाइट टू द इन्वेस्टर्स के लिए क्या इसके एडवांटेजेस हैं, और खास तौर पे ये he's been in the business of importing this product into Pakistan and creating a market for this. Please go ahead. Thank you, आफ्ताब सर। सबसे पहले तो मैं ये हाईलाइट करूंगा कि हम किस सेक्टर को जो है वो कवर करेंगे। तो स्टार्टिंग राइट फ्रॉम द डबल ए साइज बैटरीज, जो कि पेंसिल सेल का कहते हैं हम इनको, उससे लेके गीगावाट आवर्स ऑफ एनर्जी स्टोरेज, जितनी भी बैटरी की एप्लीकेशंस हैं वी एंटिसिपेट कि हम उन सबको कवर करेंगे। उसमें होम यूजर्स, कमर्शियल यूजर, इंडस्ट्रियल यूजर और एनर्जी सेक्टर ऑन द होल आ जाता है। अच्छा, डबल ए सेल, ट्रिपल ए सेल, वो सेल्स अभी हम केमिकल बैटरीज, कार्बन के सेल्स यूज करते हैं जिसकी लाइफ बहुत कम है और इट्स टॉक्सिक एंड केमिकल, और कॉस्ट वाइज भी बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है कंपेयरिंग टू गिव यू अ बैटरी व्हिच कैन सर्वाइव फॉर 30 इयर्स। उसके बाद हम आते हैं होम यूजेज की बैटरीज, हमारे घरों के बैकअप्स, यूपीएस सिस्टम्स, सोलर बहुत ज्यादा मार्केट में हो रहा है, सोलर पावर एप्लीकेशंस, ये एक दूसरी एप्लीकेशन है। तीसरी बड़ी एप्लीकेशन हमारे पास जो है वो इंडस्ट्रियल बैकअप्स, यूपीएस सिस्टम्स उनकी है। चौथी बड़ी एप्लीकेशन जो पाकिस्तान की मार्केट, पाकिस्तान क्या सारी दुनिया में बूम कर रही है, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है। हम ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि नेक्स्ट 5 इयर्स में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विल बी द फ्यूचर ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, और उसमें fancy lithium ion will not be able to survive. We are the ultimate solution for that. So we have proven that. We have a battery which has a life for 45 years, which can sustain 1 million charge discharge cycle. इसके अलावा राउंड ट्रिप एफिशिएंसी 99.121% है। आप ये अंदाजा करेंगे यूपीएस में जो बैटरी हम यूज करते हैं वो 1 किलोवाट आवर यानी 1 यूनिट बिजली का बैकअप होता है, और उस बैकअप को लेने के लिए हम 9 यूनिट बिजली जाया करते हैं। वो सिर्फ बैटरी की इनएफिशिएंसी है, लेड एसिड बैटरी की इनएफिशिएंसी है। ऑन टॉप ऑफ इट उस बैटरी की लाइफ सिर्फ 6 महीने से लेकर साल तक की है। ऑन टॉप ऑफ इट वो यूपीएस को भी यूपीएस उसकी वजह से या वो यूपीएस की वजह से वाइस वर्सा डैमेज होता है। तो ये सारी कॉस्ट को मिनिमाइज करके आप एक कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन लेकर आते हैं जिसकी बहुत लंबी लाइफ है, एफिशिएंसी है, बिजली की सेविंग है, और ऑन टॉप ऑफ इट डिग्रेडेशन नहीं है, यानी बहुत ज्यादा गर्मी और सर्दी में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर इसके बाद स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस आती हैं जिसमें मिलिट्री हो गई, जिसमें और बहुत सी स्पेशलाइज्ड यूसेजेस हैं, न्यूक्लियर है, स्पेस एरोनॉटिक्स है। आज हम दुनिया के कुछ मुल्कों में एवियोनिक्स में काम कर रहे हैं इसी बैटरी के साथ। हम ग्रिड स्केल स्टोरेज के ऊपर काम कर रहे हैं कि यूटिलिटी आज तक जो है ना वो स्टोरेज यूज नहीं कर पा रही, और शॉर्टफॉल, क्योंकि जब डायरेक्ट जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड होंगे तो शॉर्टफॉल ऑफ एनर्जी गर्मियों में बहुत ज्यादा शॉर्टफॉल हो जाएगा और सर्दियों में सरप्लस हो जाएगा। इसको सिर्फ और सिर्फ हम मैनेज कर सकते हैं स्टोरेज के साथ, और वो यूटिलिटी स्केल स्टोरेज भी हमारे पास एप्लीकेशन मौजूद है। सो बड़ी वर्सटाइल रेंज ऑफ एप्लीकेशंस है, और हमारे पास उन सारी एप्लीकेशंस के लिए प्रोडक्ट्स भी मौजूद हैं। फिर इनोवेटिव एप्लीकेशंस भी हमने डेवलप की हैं जिसमें जनरेटर है, डीजल जनरेटर के साथ सिर्फ बैटरी क्लब करने के साथ आप 53% डीजल की सेविंग कर सकते हैं, ऑन टॉप ऑफ इट जो इन्वायरमेंट को खराब कर रहे हैं वो बचाने के अलावा। तो इस तरह की बहुत सारी एप्लीकेशन है। इट विल बी अ रियली disruptive technology and we hope a lot from it. No, this is बहुत exciting है because जो आपने बताया sectors, for example ये solar panels हो गया, EV हो गया, these are all the sectors of the future and these are all the green economy sectors. और eventually अगर आप देख रहे हैं जो जिस तरह regulation आ रही है और जिस तरह business trends हो रहे हैं develop, तो this is going to be very important कि आपकी जो alignment है वो उन sectors के साथ हो जो फ्यूचर के सेक्टर्स हो, ना कि वो पास्ट के सेक्टर्स हो। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम इमाद फ्रॉम मेपल लीफ कैपिटल। उनका सवाल ये है कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड मार्केट साइज ऑफ योर सुपर कैपेसिटर बैटरीज? हम स्टार्ट तो कर रहे हैं 100 किलोवाट आवर प्रोडक्शन से, ऑल्दो वी हैव अ कैपेसिटी ऑफ 250 मेगावाट आवर्स, विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 100 किलोवाट आवर्स, 100 मेगावाट आवर्स, सॉरी। सो बट हम एंटिसिपेट करते हैं कि ये
12 से 15 गीगावाट आवर की मार्केट है इन अपकमिंग 4 to 5 years. If on the other hand अगर हम इसको देखें तो पाकिस्तान में जो बैटरी की मार्केट है वो roughly about 60 to 70 billion rupees है, जो पाकिस्तान की मार्केट है. And I believe that manufacturing in Pakistan will give us some cost effective benefit also. तो हम इसको एक्सपोर्ट करने में भी in few countries जो है वो we are very much interested in that, and on this we are also talking to Kilowatt Lab कि हमें certain areas जो है ना वो हमें दिए जाएं जो सेंट्रल एशिया में है, जो साउथ एशिया में है, जहाँ पे हम यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकें. Excellent. There is another question from Waqas Ahmed, and he's saying that, okay, what is the impact of the rupee devaluation on your business? I understand आपका एक business नहीं है, लेकिन अगर आप बहुत briefly अगर आप ये explain कर दें कि different जो आपके business के segments हैं, उनका rupee devaluation से क्या link है? I mean पाकिस्तान की सिचुएशन पे थोड़ा फर्क पड़ता है. We are quite happy जब ये रुपया नीचे गिरता है because ट्यूब जो है वो इंपोर्ट होती है. We are ग्लास ट्यूब जो है इंपोर्ट होती है and also उस पर ड्यूटी भी है. और this year में गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री को सेव करने के लिए they put 20% regulatory duty on ग्लास ट्यूब. इसी तरह से वो ऑक्सीजन तो वैसे ही इंपोर्ट नहीं हो सकती. Right. ऑक्सीजन almost very difficult to import जो है. तो ग्लास साइड पे हमें ये इसका इम्पैक्ट बेहतर ही आता है. और कैल्शियम कार्बाइड सेम थिंग. कैल्शियम कार्बाइड में भी और कैपेसिटर में भी सेम कैपेसिटर में भी ऐसा ही है. जब हम कैपेसिटर लोकली मैन्युफैक्चर कर रहे होंगे तो उसका मोस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल लोकली अवेलेबल है. ठीक है ना. तो अब जब अभी आप इंपोर्ट करते हैं तो आपको रेगुलेटरी ड्यूटीज भी देनी है, कस्टम ड्यूटीज भी देनी है. तो आल्सो प्रोटेक्टेड इंडस्ट्री प्लस डॉलर का भी इम्पैक्ट. तो तीनों चारों हमारी इंडस्ट्री हैं जिसका वी आर टारगेटिंग है, उसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा. देखिए द आइडिया द फिलॉसफी ऑफ दिस ग्रुप इज कि हम वो वाली प्रोडक्ट लेके हैं जिसका पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेनिफिट हो, जिसका पाकिस्तान के बिजनेसेस को फायदा हो. तो दिस इज अगर आप ये देखें कि 3-4 बिजनेसेस किस किस्म के नेचर के हम इसमें इंट्रोड्यूस पहले हुए हैं और कैसे करने जा रहे हैं. तो दिस फिलॉसफी और दिस थिंकिंग वुड बी visible for all to see कि क्या मकसद क्या है हमारा इंडिजिनाइजेशन करने का. Excellent. We have a follow-up question on this कि जो आपका ampules और vials वाला जो आपका है business, if you can just say कि total market size अभी मतलब कितना है और उसमें आपका कितना market share है? इसका ampule और vial. Ampules and vials. In Pakistan में ट्यूब का तो कोई और मैन्युफैक्चरर नहीं है. We are the only manufacturer in tube, glass tube. So glass tube में अगर लोगों को I would like to see show the product के लोगों को अंदाजा हो जाए what do we make. Sure. Right. There is another question और थोड़ा सा ये टेक्निकल सवाल है. वो ये है कि how much would a one megawatt ये प्रोडक्ट को जरा जूम कर लें. ये आपको दूसरा दिखाओ so that you know what we this is a value addition when we make this tube like this. Okay, interesting. कोई और इस किस्म की नहीं ट्यूब बनाता. Interesting. और इससे फिर ये इस तरह वैल्यू एडिशन कर सकते हैं. आप वाइल बना लें, आप एम्प्यूल्स बना लें, किसी भी सूरत में ले जाएं आप ना. और एम्प्यूल आप इस सूरत में तो आप जो ग्लास ट्यूब है वो ऑलमोस्ट नॉट वाइबल टू ब्रिंग इट फ्रॉम आउटसाइड. लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो लाना चाह रहे हैं. लेकिन भी लेवल पे हमारा शेयर इज अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट 22% है एम्प्यूल्स एंड वाइल्स में. और ट्यूब तो हमारे अलावा बनाते कोई, वो हम कोई ऑलमोस्ट 85% शेयर हमारे पास है. 10-15% इंपोर्ट होती है ऊपर. We have another question from Kamlesh and he's saying कि जो आपका ये kilowatt labs वाला जो आपका है business, इसमें what will be the pricing of energy storage as compared to the available solution in the market? Okay, so देखें energy storage it's a long term or it's a over a period of time cost. जब भी आप कोई बैटरी सोल्यूशन या कोई स्टोरेज सोल्यूशन लेते हैं तो दो कंपैरिजन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कि ये आपकी पर साइकिल कॉस्ट क्या है. यदि एक दफा आपने बिजली डाली और यूज की, वो क्या है. वी आर द चीपेस्ट एनर्जी स्टोरेज एज इन टर्म्स ऑफ पर साइकिल. जो चूंकि प्रोडक्ट की लाइफ बहुत ज्यादा है
45 years and 1 million चार्ज डिस्चार्ज साइकिल। तो अगर हम इसको 10 years के ऊपर इसकी कैपेक्स को जो है यूजर लेवल पर एमोटाइज करें तो 0.02 cents, 0.02 cents per kilowatt hour is the cost of storage. बट अगर अब हम आ जाते हैं प्राइस ऑफ। अच्छा, प्राइस में एक बहुत बड़ा ट्रिक ये है जो कि बड़ा क्लैरिफाई करने की जरूरत है कि लोग ये समझते हैं कि 100 एम्पियर आवर की जो बैटरी है वो 1.2 किलोवाट आवर की बैटरी है और कंपेयरिंग 1.2 किलोवाट आवर की बैटरी जो सुपर कैपेसिटर वो बहुत एक्सपेंसिव है। बट यहाँ मैं एक चीज बड़ी क्लियरली एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि 1.2 किलोवाट आवर लेड एसिड बैटरी जो है वो उसकी नेम प्लेट कैपेसिटी है, उसकी यूजेबल कैपेसिटी जो है वो सिर्फ 500 वॉट आवर्स है, क्योंकि 50% उसका डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज है, 10% कॉम्पनसेशन है, राउंड ट्रिप एफिशिएंसी बहुत लो है और स्पीड ऑफ चार्ज और स्पीड ऑफ डिस्चार्ज, यानी अगर आप उसको 10 घंटे से ज्यादा तेजी से 10 घंटे से पहले चार्ज करते हैं और 10 घंटे से पहले डिस्चार्ज करते हैं, वो भी उसको ना सिर्फ लाइफ को डिग्रेड करता है बल्कि उसकी कैपेसिटी को भी डिग्रेड करता है। तो ये सब कुछ जब हम कॉम्पनसेट करते हैं तो यूजेबल कैपेसिटी जो है वो 350 वॉट आवर्स निकलती है। राइट। तो सुपर कैपेसिटर अगर एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन में जाएं तो आप 350 वॉट आवर का सुपर कैपेसिटर एक 1.2 किलोवाट आवर की लेड एसिड बैटरी को कॉम्पनसेट करता है, उसके बराबर होता है। हम एक फॉर्मूला लेकर आ रहे हैं मार्केट में, एक बेंचमार्क फॉर्मूला, वी कॉल इट फॉर्मूला ऑफ 5, जिसमें हम कहते हैं कि लेड एसिड बैटरी का जो 12 वोल्ट का ब्लॉक है उसके जितने भी एम्पियर आवर्स हैं मल्टीप्लाई दैट विद 5। सो लेट्स से 12 वोल्ट 100 एम्पियर आवर की लेड एसिड बैटरी है, you multiply 100 with 5, you get 500 watt hours of super capacitors will perform much more better than 100 ampere hour lead acid battery। और वो प्राइस में आपको 10 से 12% प्रीमियम में आपको 1000% प्राइम प्रोडक्ट मिलता है। एक्सीलेंट। आई मीन इट्स अगर एक्चुअली तो मैं आपकी बात समझाऊं तो ये तो बिल्कुल प्रोडक्ट ही डिफरेंट है। It's a completely new technology. It's not exactly मतलब comparable, and that is great because हमारे यहाँ पाकिस्तान में technology transfer जो है, that is the need of the hour. So I'm really, I'm very excited. 100 एम्पियर की बैटरी 7000 की आती है, ठीक है? Right. और जैसे इसकी आउटपुट कैपेसिटी निकलती है सिर्फ 500 यानी हाफ, तो इसका मतलब इफेक्टिवली वो आपको 14000 की पड़ती है। ऐसे 350 एम्पेयर के इक्विवेलेंट आप करोगे तो ये बनती है 12-13 हजार की, तो ये इफेक्टिवली सस्ती हो जाएगी और आपने ये मार्केट को एजुकेट करना है। एब्सोल्युटली। देयर इज अनदर क्वेश्चन कि जो पाक ऑक्सीजन है उनका जो प्लांट आ रहा है वो भी सिमिलर कैपेसिटी का आ रहा है और उसका लेकिन जो कैपेक्स आउटले है वो 6.3 बिलियन है, आपका 2 बिलियन है। तो कैन यू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द प्लांट की टेक्नोलॉजीज और इज इट कि वो यूरोपियन है आपका चाइनीज है? हाउ थोड़ा प्लीज इस पे थोड़ा प्लीज इलैबोरेट करें। ये तो आपको ये क्वेश्चन तो कैसे पूछना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि उनका इतना मतलब एक्सपेंसिव क्यों लग रहा है? ये कमेंट करना ठीक नहीं है। अंडरस्टूड, थैंक यू वेरी मच। अच्छा सही है, एक्सीलेंट। I'll just so we've been in the call for almost 50 minutes, so I'll just take another question, just one last एक और क्वेश्चन लेंगे। In terms of your so this is more of a corporate फाइनेंस क्वेश्चन कि जब बोर्ड जब बैठता है और जब वो डिसाइड करते हैं कि हमने इस फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट में जाना है, तो यूजुअली कंपनी का जो रिक्वायर्ड रिटर्न होता है या आईआरआर होता है, एक जो होता है कि हमें एटलीस्ट इतना रिटर्न एक प्रोजेक्ट पे आना चाहिए ओवर द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, तो वो क्या एक तरह का बेंचमार्क होता है? मतलब दिस इज गोइंग टू हेल्प आवर इन्वेस्टर्स अंडरस्टैंड कि बिकॉज आई डू अंडरस्टैंड कि दिस इज ये जो इन्वेस्टमेंट्स आप कर रहे हैं ये आपकी आखिरी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, इसके अलावा आप और भी जो ना एज की मतलब इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे। तो हमारे लिए एक सेंस आ जाए कि यार क्या रेट ऑफ रिटर्न मैनेजमेंट टारगेट कर रही होती है फॉर एवरी प्रोजेक्ट दैट दे आर गेटिंग। एक्चुअली हम जो प्रोजेक्ट डिजाइन करते हैं या डिसाइड करते हैं या रिसर्च करते हैं उसमें पहली हमारी कोशिश ये होती है कि दैट प्रोजेक्ट इज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट। पहली होती है कि हम क्योंकि और उसको कितनी इजीली जो है वो हम इधर पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और पाकिस्तान की मार्केट जो है वो कितनी इजीली उसको होल्ड कर सकती है।
सबसे पहला ऑब्जेक्ट हमारा ये होता है कि हमारा प्रोजेक्ट ऐसा हो जिसमें पाकिस्तान में कंपटीशन बहुत कम हो, क्योंकि जिस वक्त पाकिस्तान में कंपटीशन नहीं होता, यू आर एनीवे यू कम्पीट विद नाउ चाइना के फ्रेट और चाइना ऊपर ड्यूटी स्ट्रक्चर इसमें भी करते हैं, तो यू विल गेट अबाउट लाइक 25% यहाँ से भी आपको रूम मिल जाता है। लेकिन हमारी अपनी कोशिश ये होती है कि कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो 35% से जीपी से कम नहीं होना चाहिए। 35% जीपी हो, 15% के करीब एनपी, 12-15% के करीब उसका एनपी आना चाहिए। लेकिन अगर वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है, दिस जीपी एंड एनपी डज नॉट रियली मैटर, दे कैन गो इनटू प्राइस वार एनी टाइम। दूसरा हमारी कोशिश ये है कि आगे आने वाले सारे प्रोजेक्ट को हम इक्विटी फाइनेंस मैक्सिमम करें, सो दैट अगर हम बिजनेस रिस्क ले रहे हैं तो हम फाइनेंशियल रिस्क ना। This is excellent. Excellent. I'll just take another question from Kamran, and he's saying that as per your notice on the PSX, there is a potential JV with a European company. तो उसके बारे में थोड़ा बताएं कि क्या एक्सपेक्टेड है, उसके बारे में क्या हम एक्सपेक्ट करें। उसमें सर्बिया में हमारा जो है वहां पे, क्योंकि बैल्कन कंट्री जब से आए हैं उसके बाद वहां पे अभी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई और काफी सारे कंट्रीज में काफी रूम्स अवेलेबल हैं, एंड दैट इज द बेस्ट वे टू एंटर इन यूरोप। तो एमपीयूज और राइट्स की वहां पे भी डिमांड काफी है, तो वहां पे हमने थोड़ी सी रिसर्च की, तो हमें सर्बिया में कुछ लोग ऐसे मिले जिन्होंने कहा जी आपके पास एक्सपर्टीज है, व्हाई डोंट यू ब्रिंग द एक्सपर्टीज इन सर्बिया एंड वी कैन पुट अप अ प्रोजेक्ट हियर। तो उसके लिए मेरी अभी भी मीटिंग हुई है पिछले 2-2.5 हफ्ते पहले, एंड अभी चल रही है उनके साथ। थोड़ा सा जब मटेरियलाइज होगा तो इंशाल्लाह वी विल गिव इंटीमेशन के साइड पे। Excellent. There's just one more question. जो आपकी ये सर्विस फैब्रिक जो आपकी है कंपनी, उसके जो राइट इश्यूज का जो था नोटिस, उसमें यू हैव मेंशन्ड कि जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट होगी वो 9 रुपीस पर किलोवाट आवर है। तो सवाल ये आ रहा है कि दैट सीम्स टू बी ऑन द लोअर साइड एज कंपेयर टू द मार्केट रेट्स। तो इस पे प्लीज अगर आपके पास कोई कमेंट हो या फीडबैक हो। जी, ये कंसेशनल ड्यूटीज हैं जो कि वी विल गेट इट फ्रॉम जो उस इंडस्ट्रियल स्टेट में दी जाए फ्रॉम द ऑलराइट। सो ये बेसिकली स्पेशल आपको उस पे एक तरह की प्रेफरेंस मिली हुई है। एक्सीलेंट। I'll just take one last question. This is from Vasil, and he's asking कि जो आपका फ्यूल एंड पावर कॉस्ट है उसमें से कितना RLNG से आप कर रहे हैं, केटर कर रहे हैं, एंड हाउ मच इज कमिंग फ्रॉम द अदर सोर्सेस। या अभी आपका बेसिकली फ्यूल एंड पावर का जो आपका बेसिकली मिक्स है किस प्रोजेक्ट के लिए, किस प्रोजेक्ट। सो जो बेसिकली है क्वेश्चन उसमें तो स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन जो आपका फॉर एग्जांपल गैसेस वाला जो बिजनेस है उसके लिए पूछ रहे हैं। इस वक्त तो वापडा सारा। अच्छा ठीक है, सारा वाला बिकॉज़ RLNG प्राइसेस हैव गॉन अप। तो इन्वेस्टर्स का एक कंसर्न है कि यार अगर RLNG को यूज करते हैं तो दे शुड नो दैट इज हम यूज ही नहीं कर रहे बिल्कुल RLNG फ्रॉम द लास्ट 6 मंथ्स। हमारा कोई रिश्ता नाता ही नहीं है RLNG से। सही है। बस मैं एक और सवाल लूंगा उसके बाद जो ना मैं आपका जो कैल्शियम कार्बाइड का जो बिजनेस है उसमें ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या है अभी आपके पास, जो उसका जो ड्यूटी स्ट्रक्चर है? 3% कस्टम ड्यूटी है, बस उसके ऊपर एडिशनल ड्यूटी है 1%। ओके, आई थिंक 3+2 है। 3+2 है। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, इट वाज अ एक्सीलेंट सेशन। आई थिंक बहुत एक्साइटिंग ट्रेंड है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का, एंड आई थिंक साइमल्टेनियसली जो आपका ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है which is looking at solar EV, I think it's a very exciting opportunity for the investors and for the country really. So thank you very much all of you for taking out time, and we look forward to inshallah engaging with you again, and I will also get in touch with you again, and we are on a mission कि हम अपने investors को educate करें। आप लोग नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, आप लोग मार्केट को एजुकेट कर रहे हैं, हम यहाँ पे अपने इन्वेस्टर्स को एजुकेट कर रहे हैं कि जो कंपनीज न्यू टेक्नोलॉजीज लेके आ रही हैं उनमें हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। So thank you so much. Thank you. Have a nice day. Thank you so much. Allah Hafiz. Thank you. Allah Hafiz.